actors. I just used to hate them कि ये कौन लोग हैं यार, ये आते हैं सेट पे, इन्हें शूट स्टार्ट करने से नारियल पानी पहले चाहिए होता है and इनके tantrums खत्म नहीं कर. I used to literally hate, and that was the popular opinion that I put across in the friends group that I was. ये मेरे साथ हुआ है कि मेरे को एक बार पुलिस ने रोका और फिर मेरे को देखकर यार मेरे को जाने दिया. ये एक बार हुआ है. अभी भी ऐसा होता है कि लोग आपको गगन से ज्यादा आपको बग्गा के नाम से जानते हैं. आपके साथ ऐसा कभी होता है? 90% of the people who kind of follow me, or they don't know my real name. And as you said also in your newsroom also, people would not know my real name more often than not. And I kind of take that as a compliment because I think it's worked well then. There can be only two questions. One can be that when is Mere Heaven releasing, or the second one can be, is he actually gay? तो अब मैं गलत वाले का मैंने हाँ जवाब ना दे दिया हूँ, you know. Hi Gagan, hi Arjun, how are you both doing? Hi. Good. Hi. Good. Hi Tonakshi. Hi. So कहाँ पर हो अभी दोनों? अरे मैं दिल्ली में आया हुआ था. I was visiting my parents and I was there for a couple of days. Oh, nice. दिल्ली में हूँ, दिल्ली में. हाँ जी. And Arjun आप? मैं बॉम्बे में हूँ, घर पे. What I call home right now, which is actually a friend's home, while my house is getting renovated close by. Okay. So Gagan, I think हमें तो फिर दिल्ली में अगर आप हो तो हमें तो मिलकर ही बात करनी चाहिए थी, because I am also in Delhi currently and I didn't know that you are in Delhi too. But anyway, कोई बात नहीं, next time सही. But आपकी एक शॉर्ट फिल्म आई है जिसका नाम है Don't Drink and Drive. जी. फिलहाल टॉपिक से ही काफी क्लियर है कि क्या कहना चाह रहे हो आप, और ट्रेलर मैंने देखा, उसमें भी काफी कुछ समझ आया. लेकिन मैं फिर भी आप दोनों से एक बार जरूर जानना चाहती हूँ इसकी थोड़ी कहानी के बारे में, और क्योंकि मैसेज तो मुझे लग रहा है कि यही है क्लियरली कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, विच इज वेरी स्ट्रेट, वेरी क्लियर. बट क्या आप थोड़ा सा बता सकते हो इसके बारे में? Gagan first. Yes. Arjun this time, please. Sorry, what's your question again? मैं कह रही थी कि टाइटल से तो बहुत क्लियर है कि क्या मैसेज देना चाह रही है ये फिल्म. करेक्ट. इट वुड बी ग्रेट अगर आप हमें इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताओ जो शायद हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है एंड वी शुड नो अबाउट. I mean, जो आपको ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है वो किसी वजह से नहीं दिखाया गया है, so I'll let that be. But the message is that only, yeah, it's pretty straightforward, but the way of delivering the message is not very straightforward. It's yeah, I've never seen this message delivered this way before, in a funny yet kind of mysterious and kind of spooky, little bit like just a eerie kind of, and I think there is some mystery to this film which is best if I don't spoil actually. बाकी तो जितनी क्लैरिटी टाइटल में दे सकते थे वो दे दी. टाइटल could have been anything. सही बात. But this is what it is. So but this is all you're supposed to know. Okay. Gagan, you have something to add here? नहीं, बिल्कुल सही बताया उन्होंने. बिल्कुल एकदम परफेक्ट बताया. One thing that I can add is कि this is a story of one night. That correct. एक ही रात की कहानी है कि एक ही रात में what happens if you drink and drive. Okay. अच्छा, आप दोनों में से कभी भी सच बताना, बिल्कुल ठीक है, मतलब मानती हूँ इंटरव्यू है, बट फिर भी कभी कभी सच बोल लेते हैं. तो कभी yes, मैंने करा है. जी. Yes, I have done it, but ask your question. I didn't even have to ask it. I've probably done it, but ask your question. नहीं, मैं तो फिलहाल ड्रिंक वाली बात तो जा ही नहीं रही थी. मैं तो जनरली पूछ रही थी किसी भी रीजन की वजह से ड्राइव करते टाइम पुलिस ने पकड़ा या नहीं, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या नहीं? You agreed to something that she was not even asking. She could have made the question anything. Anything now, yeah. Agreed. के आपने कभी anyway, let's not give ideas. Yes, of course that's happened. Of course it's happened. I mean, मैं बिल्कुल ये धूप में नहीं सफेद हुई दाढ़ी. सही बात है. पुलिस से पकड़े जाने के बाद सफेद हुई है. सही बात है. बट किस चीज के लिए पकड़ा गया था? Can you share that as well? I mean, sure. I mean, seat belt, mask,
ये बस ये recent बता रहा हूँ अभी, तो यही basic thing, ऐसी कोई ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं, चोरी डकैती नहीं। आई थिंक मास्क वाला तो सभी के साथ हुआ है रिसेंट टाइम, Yeah, तो yeah, मुझे लगता है वो तो एक सबके पास है। अच्छा, yeah. गगन आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? कब पकड़ा पुलिस ने? पकड़ा तो होगा। कब पकड़ा है पुलिस में यार, आप ऐसे मत बोलो, मतलब I know. क्या ये है ना? क्या यार? I mean, ओके, ट्रैफिक We are पुलिस not the ने Vadali brothers. I gotta say, I have to say that all the interviews of this are treading very dangerous territory, है ना गगन? dangerous territory, yeah. All It of can be them are like, cut out and used anyhow. yeah. All of them are like, क्या तुम drink and drive करते हो? You know? And 10 and 20 years later, they'll be coming back to haunt us. कि तुमने एक इंटरव्यू में ये बोला था। आप Anyway. चला कुछ रहे नहीं थे, है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ वेरी बिग क्राइम, जो वो वाले लाइक खून करने वाले क्राइम्स वाली चीज नहीं है, बट दिस इज समथिंग जो हमारे I'm साथ sorry, हुआ है। आजकल कुछ पता नहीं। Anyway, yeah. बट मुझे लगता है कि किसी ना किसी रीजन से हमें ऐसा हुआ है कि हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो पुलिस ने जरूर रोका तो है ही। सो इस तरह का इंसिडेंट तो जरूर हुआ है। गगन वो तो आपके साथ ऐसे ही कब हुआ उनको वो तो उनका मन करता है, तो they don't need a reason. ऐसे ही Yeah. रोककर मुझे ऐसे भी पूछा है, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? है? yes. बस जा रहा हूँ यार, that's all, you know. Maybe they didn't have anyone to chat with, और थोड़ा सा मन करके थोड़ा किसी से बात करने का तो रोक के पूछ Or लिया। maybe he was a fan. Maybe he was a fan and he just wanted to talk to you. ये मेरे साथ हुआ है कि मेरे को एक बार पुलिस ने रोका और हाँ। फिर मेरे को देखकर यार मेरे को जाने दिया। ये एक अरे बार हुआ है, ये एक बार हुआ है। I was like, sorry. Actually, no, he didn't recognize my face. I'll be honest. But my partner was with me, and the second she told him, and we were actually driving back from a shoot, और मैं गलती से गलत रास्ते में घुस गया, वन वे में घुस गया गलती से, और वहाँ at the end of the one way मुझे पकड़ लिया, और फिर कुछ भी करके ये करें वो करें क्या करें, and then as soon as she said कि sorry भाई साहब, हम शूट से पूरे दिन शूट करके बहुत थक के वापस जा रहे हैं, ये एक्टर हैं, and he was like अच्छा, and then he like 2 minutes chat and then he let me go. अच्छा, ऐसा पूछा नहीं कि अच्छा किस में आए थे, क्योंकि ऐसा आई थिंक ये नहीं, बहुत of कॉमन course. क्वेश्चन होता है। नहीं पूछा था, पर ये प्री मेड इन हेवन वाले दिन थे। हाँ, ओके। अच्छा, आज नहीं, one of my very famous friends have told me that this can go two ways. Yeah, for sure. Yeah. आज की डेट में आज की this डेट में can it will go two go. ways. Today it will go in the bad direction only, I think. Yeah. Those days were simpler, you know. Yeah. Correct. Yeah. That's understandable. True. Must have been like 2013 or something. Oh, man. Yeah. Okay. अच्छा, जो दो अभी एक्टर्स मेरे साथ बैठे हैं, जो आज मुझसे बात कर रहे हैं, वो दोनों ऐसे हैं जो जिन्होंने शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर बन के करी थी, और जो गगन का तो फिलहाल मुझे स्टार्टिंग से पता है, स्त्री को आपने असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह उसमें आपने काम किया था, और वरुण अर्जुन आपने भी बंटी और बबली एंड रंग दे बसंती में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, if I'm not wrong. Yeah. I didn't know that. I actually did not know that about Gagan. That's great to hear. Oh wow, I didn't know that. Yeah, so that's a common ground आप दोनों का जो जर्नी शुरू हुई है वहां से हुई है। So एक जगह आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनके आपने शुरुआत करी अपने करियर की, फिल्मी करियर की, आई वुड से, और अभी एक्टर हो, तो क्या इट वाज ऑलवेज क्लियर कि एक्टर बनना है, या पहले था कि डायरेक्शन में ही काम करना है? गगन, we'll start with you. Yeah. I wanted to become a director. I started with theater and I started writing and directing plays. तो मेरे को बहुत मजा आया, एंड उससे पहले मैं एक्टिंग करता था इन थिएटर, एंड आई थॉट कि यार मुझे ना इसमें ज्यादा किक आ रही है, एंड देन आई स्टडीड डायरेक्शन फॉर एन ईयर. I came to Mumbai, started filmmaking, and I used to hate actors. I just used to hate them कि कौन लोग हैं यार, ये आते हैं सेट पे, इन्हें शूट स्टार्ट करने से नारियल पानी पहले चाहिए होता है, एंड इनके टैंट्रम्स खत्म नहीं. I used to literally hate, and that was the popular opinion that I put across in the friends group that I was. And I really wanted to become a director, but after a couple of years and night पूरा रात भर काम करने के बाद, I realized कि assisting was a very managerial job, and I was under the impression that it would be as creative as I thought it would be. And then I thought I would take the route of writing a film on my own.
एंड डायरेक्टिंग इट, और मैं कोशिश करूंगा कि वो किसी फिल्म फेस्टिवल में जाए और कुछ हो जाए, एंड फ्रॉम देयर आई कैन बिकम अ डायरेक्टर. बट बिफोर दैट कुड हैपन आई गॉट एन एक्टिंग प्रोजेक्ट, एंड पिछले 5 साल से फिर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. और अब मेरे सारे दोस्त जिनके सामने बैठ के मैं एक्टर्स को कोसता था, वो मुझे सारी बातें याद दिलाते हैं कि तूने ये बोला है और अब तू वही है. So I think your debut project was college romance only. जी जी. Okay. I क्योंकि वो started नहीं acting होता at तो college बग्गा once. कहाँ से मिलता. हाँ जी, हाँ जी. ओके अर्जुन, आपके भी माइंड में ऐसा था कि एक्टर बनना है या असिस्टेंट डायरेक्टर में आप वो थे उस टाइम पर कुछ? नहीं, मुझे एक्चुअली शुरू से एक्टर बनना था, बचपन से ही. एंड असिस्टिंग फॉर मी, मैंने स्कूल खत्म करके इट वाज क्लियर टू मी कि मुझे करना ये है. और मैंने सोचा कि मुझे कॉलेज जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना है. आई Very नो व्हाट आई वांट टू डू. आई थिंक आई वांट टू जस्ट मूव टू बॉम्बे, एंड वहां जाकर आई विल गेन सम एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, एंड आई लर्न व्हाट आई हैव टू, बिकॉज आई हैड नेवर स्पेंट टाइम ऑन अ फिल्म सेट. मुझे didn't know head or tail of filmmaking or anything like that. Yeah. So, but I had done my acting courses. I had done whatever I could find around. This Kishore Namit Kapoor in Versova, and Mr. Barry John in Delhi. So all this I had done, and then I moved to Bombay, and I just started working as an AD. And पर मेरा यही था, honestly, even while I was working as an assistant director, learning all about the process and everything. बट बहुत क्लियर था मुझे दैट आई एम हियर प्राइमरीली, मुझे ऑब्जर्व करना है, आई एंड आई रियली गॉट टू be around some magnificent actors in my AD years. 2 projects with Mr. Amir Khan, Mr. Amitabh Bachchan, and the like, and it was really a fantastic learning. Also spent time around actors from whom I learned what not to do. So overall it was just amazing education and experience, and then करते करते एक फिल्म, मेरा प्लान सिर्फ था मैं 1-2 फिल्म करना चाहता था, and but then you get greedy, अच्छा ये प्रोजेक्ट है, चलो अब ये करते हैं. And then finally रंग दे बसंती was my last one, which I was not, but then this project came and I read this script and I was like, my God, ये तो करना ही है. So that became my last film as an AD, and then by which time I was like 25 or something, so I was like, भैया ट्रेन निकल रही है जल्दी से, and the AD life is also like quite an unhealthy life. Okay, you live on chai and cigarettes, and so I had to take a year off. I had to kind of work on myself, join a gym, and ye wo. Then I also, in that year off, I went to Lee Strasberg and did a course there. So I just tried to train myself as much as possible without going to college. That's all. Yeah. But have you ever been on a set where you're working with people that you've assisted? Because now that happens with me. And they pull my leg like how? No, not directly. Actually, I did an ad with Shad. That was many years ago. But yeah, I mean, invariably, every project I land upon has somebody who knows me from my AD days. Even if it's Nitin Rao, Steadicam operator, who comes for 2 days, So, but yeah, but I really enjoy. But most of all, it's the lightmen, actually. Mansoor Bhai and Maqsood and all these, like they've all seen me, and the Boom Dadas, they've seen me like as a piddu, man. Like, they've taught me how to and they remember. They remember. And we remember, like at least we will. Yeah, it's pretty amazing. Yeah. I believe ऐसा होता ही होगा, of course, because industry is not that big, of course. Of course not, and absolutely. कितने सारे projects चल रहे होते हैं, तो they keep on shifting. So कहीं ना कहीं वो लोग मिल जाते हैं, चाहे नाम से ना याद रहे, but I think face से तो याद रह जाते हैं कि हाँ आप भी थे ना. Often ऐसा होता है project पर मिलकर, बस ऐसे ही होता है कि first everything is done, and after a whole day of hanging out with someone, then you're like, यार हमने इससे पहले कौन सा किया था? It's like, it's like sometimes it doesn't even matter. But yeah. Okay. अच्छा गगन, आप तो ना मेरे को लगता है कि गगन से ज्यादा सबके लिए बग्गा हो, जो अभी मैं अपने कॉलीग्स को बताया, मैंने कहा अरे वो बग्गा, कहते हैं अच्छा बग्गा का इंटरव्यू ले रही है तुम,
मैंने कहा हाँ, तो बग्गा मुझे लगता है कि सबको याद रहता है। अभी भी ऐसा होता है कि लोग आपको गगन से ज्यादा आपको बग्गा के नाम से जानते हैं, आपके साथ ऐसा कभी होता है? Absolutely. मतलब एक second, just to give context to Arjun. Arjun, I did a show called College Romance in which I did a Right. character named Bagga, Right. Yeah. which Yeah. got really famous. I know I know the show is really famous, and I know हाँ. that you were in it. I'm sorry. अरे, Yeah. नहीं, it's fine. It's Yeah. definitely Yeah. fine. Yeah. So, it happens. I think 90% of the people who kind of follow me, or they don't know my real name. And Yeah. as you've said also in your newsroom also, people would not know my real name more often than not. And I kind of take that as a compliment because I think it's worked well then. Yeah. ओके Yeah. अच्छा, गाड़ियों से मुझे लगता है आपको कुछ अलग ही सीन चल रहा है गगन, किसका? कहीं ना कहीं गाड़ियों से कुछ अलग ही सीन चल रहा है। गाड़ियों से ऐसा। कभी कॉलेज रोमांस में गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हो, गुस्से में आके अब यहाँ पर फिर से गाड़ी से रिलेटेड फिल्म लेकर आ गए हो, तो ये क्या है, ये क्यों ऐसे ऐसे ही प्रोजेक्ट्स की तरफ क्यों भाग रहे हो? I think the car मेरा गाड़ी लेने का टाइम आ गया है. I think मेरे को universe is giving me those signs. But jokes apart, I think बहुत interesting. It's a very interesting way of putting out the word कि don't drink and drive. Yeah. So obviously you'll have to have a car in that. And so I don't know how to answer this question. I'm really Yeah. sorry. May I add? May Please. I add Please do. that this happens to be the third time that हाँ. I have been pulled out of a car with another man on camera. In fact, that was the first thing I said to Jay possibly कि यार ये मैंने ना 2 बार पहले करा हुआ है कि मैं और एक आदमी गाड़ी में है और पुलिस बाहर निकालती है. It happened in a film called I Am, which was directed by Onir, and then it happened in Made in Heaven also, and now for the third time here. Right. So for me, actually, to be watching that scene feels like I mean, that's what this is very different from the other two. Yeah. You know, the other two were in fact quite similar to each other. Correct. But this is very different, which is why it's okay. But still, it's weird seeing it for the third time, like on screen, like अच्छा फिर से ही हो रहा है, okay. I think the pattern बन रहा है. Yeah. नहीं, because at the end of the day, some things will remain common in across stories, across genres. Correct. I think. Yeah. अच्छा अर्जुन, क्योंकि मेरी आपसे बात हो रही है and मुझे कमेंट्स में गालियां पड़ सकती है अगर मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, so मुझे बचाने के लिए I'll tell you. Arjun, I would say let her complete this one. हाँ. Complete your question, please, ma'am. I'm not asking. No, now Gagan has said a good thing. There can be only 2 questions. One can be that when is Made in Heaven releasing, or the second one can be, is he actually gay? तो अब मैं गलत वाले का मैंने हाँ जवाब ना दे दिया हूँ, you know. But yeah, I'll go with the first one then. First question. When is Made in Heaven 2 releasing? Yeah, well, I finished my work. I finished shooting it. We finished shooting in earlier this year, and ahead of that, Baki is all, I don't know. You need to ask the creators and Amazon, and you know, यहीं पर है, call पर है Amazon की team. Just साइड में पूछ लो. अभी करते हो. ठीक है. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि दोनों का दिल्ली से रिश्ता रहा है और मैं दिल्ली वाली हूँ, और मेरे हिसाब से मेरा आज तक का कोई ऐसा चैट नहीं रहा, कोई इंटरव्यू नहीं रहा जहां पर मैंने दिल्ली को लेकर लोगों से बात नहीं करी है, बिकॉज वो दिल में बसता है. सो दिल्ली कितना खास है दोनों के लिए? I mean, very much so. Everything. I mean, it's my growing up life, earliest memories, the best part of my life. My entire extended family, सारे cousins, nana, nani, सब कुछ. School, 2 out of 3 schools that I've been to in my life. First girlfriend, सभी कुछ दिल्ली तो है, you know. Yeah. Correct. As in, it is where we both grew up. So kind of. Also, यहाँ पर ना बहुत सारे firsts हुए हैं. Your first school day, your first kiss, your first girlfriend. So it automatically becomes very, very special. Yeah. In fact, right now it's really sad, but it's also true that I mean, it's just really sad that the air pollution state in Delhi is such a tragedy, because
It's all like, I mean, it takes me a few days, and each time even if I'm in Delhi for a few days, I come back to Bombay with a bit of it always takes a few days for it to exit the system. Yeah. You know, my father, my little niece who lived there, it's just really sad. Honestly, it's like Yeah. it's reaching a situation where it hurts to see my loved ones breathing that air day in and day Yeah. out. You know, it's just, I really, otherwise, yeah, it's true. Delhi has had my heart all my life, but doesn't have my lungs. That's all. Yeah. You know, yeah, Good one. yeah, yeah. अच्छा, so is it right to say कि दिल्ली एक इमोशन है आप दोनों के लिए कहीं ना कहीं? Absolutely. Definitely. And दिल्ली का I think खाना so. भी. अरे Yeah. ये बात तो है. There's no comparison. I'm putting There's this no to rest comparison. right here. Yeah. That Bombay, Me too. I love you. I call myself a Bombay wala now. But on food, we don't have shit on Delhi. Yeah. Yeah. No. Delhi is just, yeah. Okay, because खाने की बात ये है, so let me just put out one more thing and आप दोनों को बताती हूँ कि मैं दिल्ली में फूड टूर्स करती हूँ सेलेब्स के साथ, और जब भी दिल्ली में सेलेब्स आते हैं तो उनके साथ एक फूड टूर होता है उनकी किसी भी पसंदीदा जगह पर, जैसे कि कोई नॉर्थ कैंपस चूज करता है, कोई साउथ कैंपस चूज करता है, या कोई कहते हैं मजनू का टीला जाएंगे खाने पीने, तो वहां पर जाते हुए बहुत सारी चैट होती है, प्रोफाइलिंग होती है, बहुत सारी जर्नी के बारे में बातें होती है. सो आई जस्ट वांट टू नो दिस फ्रॉम बोथ ऑफ यू, क्या ऐसा होता है? तो क्या आप दोनों इंटरेस्टेड हो गए उसका पार्ट बनने के लिए? Sure, absolutely. तो खाते पीते गप्पे मारेंगे. Full on. You ठीक है, had me done. on खाते पीते. Yeah. चलो Yeah. ठीक है, डन देन. फिर ठीक है, ऐसा करते हैं, बिकॉज अभी तो गगन आई थिंक किसी कमिटमेंट की वजह से ही दिल्ली में होंगे, बट नेक्स्ट Correct. टाइम व्हेनेवर यू बोथ आर इन दिल्ली जस्ट लेट मी नो, एंड आई होप आपके पीआरस अभी सुन रहे हो, सो जस्ट लेट मी नो व्हेनेवर यू बोथ आर इन दिल्ली एंड विल डू अ फूड टूर विद यू फॉर श्योर. बहुत फन होने वाला है. For Done. sure. चलो, Thank done. you. बाकी about don't drink and drive, very interesting concept. It's not something जो हमने नहीं सुना या सुनते नहीं आए लोगों से, बट जैसे कि आपने बताया कि इसको दिखाने का तरीका काफी अलग है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि सबको ये देखनी चाहिए, एंड आई होप लोग देखें एंड कुछ सीख कर ही जाए उससे. Yeah, absolutely. Thank you. Thank you. Correct. Thank you so much, Arjun. Thank you so much, Gagan, for your time today, and it was lovely chatting with you both.